your English class, बच्चे. So children, this is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. Children, today we are gonna start a new chapter, that is chapter number 5 of your Roots and Wings, the Distinguished Stranger. Alright, this video will be your first part. ये जो video अभी है वो that is the first part in which I will explain the story. In the part 1 I will explain the story, and then in the next part, that is part 2, I will discuss the exercises that will include question answer. All right. And in the part third, there will be remaining exercises that it will be start from the grammar spotlight. Fine. Okay. So it means there will be three part of this chapter. Fine. Okay. So how many of you have seen the movie कोई मिल गया? देखा है आपने कोई मिल गया मूवी? मैंने तो देखा है भाई. उसमें आपने देखा है एक एलियन आता है बाहर से जो ऋतिक रोशन का फ्रेंड बन जाता है. अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो भाई. अगर आपने उसमें देखा होगा कि और वो मूवी ना बच्चों के लिए है स्पेशल, आप देख सकते हो, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग सी मूवी है. और उस मूवी को आप इस चैप्टर से ना ये कर सकते हो, मैच कर सकते हो, बहुत सारे इंसिडेंट्स उससे मैच करेंगे. जैसे उसमें एलियन गाना, दैट वाज व्हाट, दैट वाज स्ट्रेंजर, इट मीन्स दैट केम फ्रॉम द अदर प्लैनेट. उसमें जो एलियन आता है वो कहाँ से आया था? दैट केम फ्रॉम द अनदर प्लैनेट ना. हम्म. जिसमें उसे जादू बोला गया है. जादू, है ना? जादू, ये वाली थी उसमें. या तो जो एलियन का नाम उसने रखा था, बच्चों ने जादू रखा था, राइट? तो उसी तरह जो एलियन है उसी तरह इस चैप्टर में आपको यू कैन से दैट एलियन ही कह सकते हो, क्योंकि हमारे लैंग्वेजेस में तो एलियन ही कह सकते हैं, हम बच्चों के लैंग्वेजेस में. ठीक है. या स्ट्रेंजर मीन्स आप समझ लो एलियन. फाइन. ऐसे स्ट्रेंजर मीन्स होता है, इट्स रियल मीनिंग इज अननोन पर्सन. फाइन. ओके. So in this chapter, we are also going to discuss about the person who came from the other planet. दूसरे planet से जो आए हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. फाइन. ओके. हाँ, वन मोर थिंग चिल्ड्रेन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे वीडियोस इजीली मिल सके और आपके कोई भी चैप्टर मिस ना हो. फाइन. एंड डू लाइक माय ऑल द वीडियोस आल्सो. जो भी वीडियोस आप देखते हो नीचे थम्स अप का दिया रहता है आइकन, आप वहाँ पे क्लिक करके लाइक कर दिया करो. ओके. अगर आप ऐसा करते हो ना तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, लगता है कि हाँ बच्चे मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं. तभी तो मैं इंकरेज होंगी, तभी तो मैं और भी वीडियोस बना पाऊँगी. और अगर लगेगा लगता कोई देखता ही नहीं, किसी को पसंद नहीं आती मेरी वीडियोस, तो मैं डिमोरलाइज़ हो जाऊँगी. एंड देन लगेगा कि क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ बच्चों, क्यों मैं वीडियोस बनाऊँ जब बच्चों को पसंद ही नहीं आ रही. ओके. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट इट. ओके. अब हमारी बहुत सारी भाषण हो गई, अब चलते हैं चैप्टर पर. ओके. फिल्मों की बातें हो गई, बहुत कुछ हो गई हमारी बातें. ओके. देयर इज अ शॉर्ट एक्सरसाइज दैट इज गेट सेट. Imagine you have been selected to travel to a nearby planet for a special task. Which planet would you like to visit, and what are the 10 things you would like to carry? Take the pictures of the things you would carry with you. Add names of the things other than these that you think you may need. Suppose if you are selected to travel to other planet, अगर आपको ऐसा चांस मिलता है, if you get the chance to go to the other planet, तो आप कौन सा planet चूज़ करोगे? अगर जो भी प्लैनेट आपने सोचा है ना, जस्ट कमेंट मी डाउन. फाइन. और एंड वन मोर थिंग, अगर आप दूसरे प्लैनेट पर जाते हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहोगे? दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन हेयर एंड यू हैव टू टिक इट. अभी आपको चूज़ करने, क्योंकि हर बच्चे का तो चॉइस अलग हो सकता है ना. कोई कुछ ले जाना चाहेगा, कोई कुछ ले जाना चाहेगा, तो यहाँ तो वेरी कर सकता है. सो मुझे यहाँ पर आंसर करना मेरे लिए सही नहीं है ना. सो यू विल डू इट बाई योर सेल्फ. आप जो भी चीज़ों को, वट एवर थिंग्स यू वुड लाइक टू कैरी, देन जस्ट टिक इट हेयर. फाइन. आप उस पर टिक कर लो. Fine. Okay. Now moving to the next one, coming to the next page. Now here, this story is written by R.L. Stevenson. It means Robert Louis Stevenson. Okay. And Robert Louis Stevenson was a great Scottish writer of the 19th century. He is known for his famous works like Treasure Island. जैसे उन्होंने ये स्टोरी लिखी है द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर, इन द सेम वे ही हैज़ रिटन मैनी अदर स्टोरीज आल्सो, सच एज ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड. दिस टू आर द फेमस. ओके. दिस टू दिस टू वर्क्स वर फेमस ऑफ हिम. Read and find out what happened when a stranger from a neighboring planet visited the earth. In this chapter we are going to discuss about the stranger, that is
you can say alien who has came who has come from the other planet, okay, and who has come from other planet to earth, वो earth पर आया है. And see how he's talking, how which type of questions he is asking, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. Fine. See, look at the picture is given here. This is your stranger, that means this is your alien, you can say. Yeah, this one. ये देखो इसकी ये रही वैन जिससे वो आया है ना. ये रही उसकी अ, इससे उसने ट्रैवल किया है अर्थ पर. जैसे जादू कोई मिल गया में जो जादू है जो एलियन था उसने भी देखा ना आपने, वो भी ट्रैवल करता है, उसकी भी एक अलग सी वो रहती है ना. वो बहुत सारे एलियंस आते हैं तो एक एलियन ना छूट जाता है, यहाँ बाकी सारे चले जाते हैं वापस, बस एक छूट जाता है और वही बन जाता है बच्चों का क्या फ्रेंड. और उसे सबने क्या नाम दिया था, जादू. ओके. बट लास्ट में स्टोरी में क्या होती है ना, फिर वो उसके जो भी रिलेटिव्स थे वो उसे लेने आते हैं, वो फिर उसे लेकर चले जाते हैं एलियन को. ओके. सो नाउ मूविंग टू द स्टोरी. अब आप आ जाओ. Here the stories begin. Once a stranger from a neighboring planet came to this earth. He was met at the place of his descent by a great philosopher. Here is talking about that a, a stranger came from another planet. Is was the neighboring planet, मतलब अर्थ से कोई जो भी neighboring planet है उससे. यहाँ here the name is not mentioned from which planet, name mention नहीं किया गया है. Okay, fine. Or and he met with a philosopher. Okay, and he came at the place of descent. Place of descent means the place where he visited. Okay, see the meaning. Place of descent, place where the visitor landed, जहाँ इन लोगों ने लैंड किया था, इन एलियंस ने. Okay, that is called the place of his descent by a great philosopher. Philosopher means a person who is having very much knowledge, wisdom. All right. Okay. And wherever they landed, they met a philosopher. जहाँ ये aliens आए थे, जहाँ ये strangers आए थे, उन लोगों ने किससे मिला, stranger से मिला उस जगह पर. Fine. First of all, they came through a wood, and the stranger looked upon the trees. Who do we have here? Said he. And then what happened? ये जो stranger है and philosopher, they were just passing through a forest. Here the meaning of wood is not that one lakdi. Its meaning will be forest. Okay, wood means forest. Here the meaning of wood means forest. They were passing through a forest, and then अब and you know this very well कि forest में वो क्या मिलेंगे, plants and trees देखने को मिलेंगे, right? Then here the stranger also saw the plants and trees, and then when they saw these trees, then what they said, जब इन stranger ने देखा, इस alien ने देखा trees को, तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, who do we have here, said he. उसने पूछा ये क्या है, what are these things. ये लोग क्या है, उनको they were thinking like that they are the person, ये लोग क्या है. Okay, fine. Then see what philosopher replied. These are only vegetables, said the philosopher. They are alive but not at all interesting. The philosopher said that these are the vegetables, means these are the plants and trees. Okay, and they are alive but not at all interesting. मतलब they are alive, वो तो they are living things, but they can't move, they can't speak, they can't think. Okay, that's why the philosopher has said them they are not interesting. Okay, because they can't speak, they can't move, that's why he has used this word not interesting. Fine. Okay. I don't know about that, said the stranger. They seem to have very good manners. Do they never speak? And then the stranger is asking from the philosopher that is saying to the philosopher that I don't know about that, because इन द ये जो अपने इन हिज ओन प्लानट जहाँ से ये स्ट्रेंजर आए थे, वहाँ इन लोगों ने ऐसा नहीं देखा था, वहाँ प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं देखा था. दैट्स वाई इट वाज स्ट्रेंज फॉर देम. इन लोगों के लिए दिस वर द न्यू थिंग्स, इन लोगों के लिए नई चीज़ थी. दैट्स वाई ही सेड आई डोंट नो अबाउट दैट. इसलिए इनको इन प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी पता नहीं था. ऑल राइट. एंड द स्ट्रेंजर सेड दैट दे सीम टू बी वेरी मैनर्ड पर्सन. मतलब ये ना स्ट्रेंजर को ना ट्रीज एंड प्लांट्स बड़ा मैनर वाले लग रहे थे, क्योंकि वो एकदम खड़े हैं तो खड़े हैं, एंड देन दे आर नॉट मूविंग एंड देन फिर उसने क्या पूछा, डू दे नेवर स्पीक, कि ये कभी नहीं बोलते, ये प्लांट्स एंड ट्रीज बोलते नहीं है. देन सी व्हाट द फिलोसोफर रिप्लाइड. दे लैक द गिफ्ट, सेड द फिलोसोफर. लैक मीन्स विदाउट, मतलब इट मीन्स
They are not blessed with the God that they can speak, they can move, they can walk, they can think. Okay. फिलोसफर ने कहा कि ये जो गॉड ने जो हमें गिफ्ट दी है कि हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, ये गिफ्ट इनको नहीं मिला है, प्लांट्स एंड ट्रीज को नहीं मिला है. ओके. दैट्स व्हाई ही हैव यूज्ड, that's why he this philosopher has used the word lack the gift. Okay. Yet I think I hear them sing, said the other. Said the other means what? It means there were more than one alien, है ना? There were more than one stranger. वहाँ और भी वहाँ पर stranger available थे. Fine. तो दूसरे ने क्या कहा कि yet I think I hear them sing. Then he said that मुझे ना uh, कुछ गाने की आवाज़ आ रही है. Okay. Then see what the philosopher replied. That is only the wind among the leaves, said the philosopher. Philosopher ने कहा ये जो गाने हैं ना वो ये लोग गा नहीं रहे पेड़ और जो पौधे जो लगे हुए हैं दे आर नॉट सिंगिंग दीज आर द वॉइस विच इज कमिंग फ्रॉम द लिप्स जब व्हेन द विंड मूव्स जब हवा चलती है तो लिप्स कैसे आवाज़ करते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं एंड देन दे क्रिएट अ साउंड ना या देन दैट वाज द साउंड विच दे हियर एंड दे थॉट दैट दे आर सिंगिंग ओके then philosopher said, I will explain to you the theory of winds. It is very interesting. इसने कहा फिलोसफर ने कहा कि मैं आपको आई विल टेल यू द थ्योरी ऑफ विंड्स मैं बताऊंगा विंड्स की थ्योरी मीन्स कि क्या होता है जब विंड्स चलती है तो क्या होता है कौन कौन से फंक्शन होते हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेड द फिलोसफर फाइन see this is the philosopher and this is the stranger here this one is the philosopher and this is the stranger all right ये philosopher है okay and they are talking to each other and then what again what was their conversation and then what they talked see well said the stranger I wish I knew what they are thinking stranger said that काश मैं ये जान पाता कि ये लोग क्या सोच रहे हैं ये पेड़ जो खड़े हैं चुपचाप से ये लोग क्या सोच रहे हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है आई विश आई कुड हैव नोन इट देन द फिलोसफर रिप्लाइड दे कैन नॉट थिंक सेड द फिलोसफर फिलोसफर ने कहा ये बोल नहीं सकते हैं तो ये सोच भी नहीं सकते then again the stranger replied, I don't know about that, returned the stranger. The stranger replied back, I don't know about that. मैं इनके बारे में भी नहीं जानता ये भी मैं नहीं जानता कि अच्छा ये सोच भी नहीं सकते ऐसा है Oh, and then laying his hand upon a trunk, I like these people, said he. अब इस स्ट्रेंजर ने क्या किया ना बड़े आराम से उसने अपने हाथों को उस पर ले डाउन कर लिया मतलब ट्रंक पे ट्री के जो ट्रंक थे ना जो भी ब्रांचेस थे उसने उसे टच करके ऐसे आराम से हाथ रख लिया एंड देन ही सेड आई लाइक दिस पीपल सेड ही स्ट्रेंजर ने कहा मैं इन लोगों को मैंने इसे पसंद किया देखो क्या ये लोग पीपल है ट्री क्या आप ट्री को पीपल कह सकते हो नहीं ना नहीं देखो देन सी next they came through a meadow where there were cows and then next they visited through a field meadow means field okay then what they saw they were cows who were grazing और वहाँ लोगों ने देखा कि काउस कुछ का यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो सी these are the cows right and here there are two person it means one is philosopher and one is the stranger that is alien and then they saw cows then again the stranger is asking these are very dirty people said the stranger अब आप लोगों ने देखा ना जो गाय होते हैं वो क्या गंदे गंदे रहते हैं ना कुछ को मिट्टी लगी होती है कुछ को कुछ लगे होते हैं तो इसने जब देखा इसने तो कहा ना ये दीज आर वेरी डर्टी पीपल ये बहुत ही गंदे लोग हैं ये स्ट्रेंजर ने कहा okay then they are not people at all said the philosopher he explained what a cow is in scientific words which I have forgotten then उसने फिर क्या किया कि बताया फिलोसफर ने कि no they are not people they are animals there is basic difference between people and animal okay and then the philosopher explained the meaning of cow what are they and what they used to do everything they he has explained here okay that is all one to me said the stranger but why do we but why do they never look up देन उसने स्ट्रेंजर ने कहा मेरे लिए सब कुछ ना सब कुछ सब एक जैसा लग रहे हैं मेरे को एंड देन उसने पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा स्ट्रेंजर ने यहाँ पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये लोग ऊपर क्यों नहीं देखते हैं नेवर वाई डू दे नेवर लुक अप ये लोग ऊपर क्यों नहीं देखते हैं अब बात तो सही है ना गाय जो है मतलब हमेशा नीचे देखते हैं वो लोग है ना अब आप बताओ क्या हो सकता है आंसर देखो फिलोसफर ने क्या रिप्लाई दिया Yes, because they are graminivorous, said the philosopher, and to live upon grass, which is not highly nutritious, requires so close an attention to business that they have no time to think or speak or look at the scenery or keep themselves clean. Gramnivores means feeding on grass.
आपने सुना ना, कार्निवोर्स, omnivores, इन द सेम वे इट इज ग्रैमिनिवोर्स, हार्बीवोर्स को ही आप कह सकते हो ग्रैमिनिवोर्स वरस, ओके। तो उसने बोला जो दिस काउज आर ग्रैमिनिवोरस एंड दे जस्ट ओनली फीड ग्रासेस, ऑलराइट, grasses and plants, okay. And then the philosopher said that these animals don't have any time to think about their look, to think about anything else. They just pay concentration on their eating, बस वो लोग पूरी फोकस करते हैं खाने पर क्या खा रहे वो लोग, okay, fine. And so they don't have time to think or speak or look at the scenery, उनके पास टाइम नहीं है कि कहीं वो देखे इधर उधर भी, all right, yeah. एंड टू कीप देमसेल्व्स क्लीन, या फिर अपने आप को वो लोग साफ रखने के लिए इसके बारे में सोचे भी, दे जस्ट फोकस ऑन देयर ईटिंग, ओके, या। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वेल सेड द स्ट्रेंजर, वेल सेड द स्ट्रेंजर, दैट इज वन वे टू लिव, नो डाउट, बट आई प्रेफर द पीपल विद द ग्रीन हेड्स. Then what the stranger said, but na I like the people with the green heads. Here the green heads means trees. जिनके ऊपर green green होते हैं ना. He's talking about the trees. All right. Here the stranger is talking about the trees. He told that, but um, I like trees most than the cows. मुझे ना trees ज़्यादा पसंद आ रहे cows के comparison में. All right. Okay. Next, they came into a city and the streets were full of men and women. And next, where they passed through a city. Okay, wait, let me show you the picture. It is in the previous. See here the picture given. This is the city where they are passing. All right, and these are the people. This picture is given the previous page. All right, yeah, these are the people in people of city. ये लोग कहाँ city के लोग हैं. All right. Oh, why is it sliding? People of city, fine, okay. Now coming to the next page again. Next, they came into a city and the streets were full of men and women. I have already shown you the picture. That was the city and the streets were full of men and women. लोग थे ना वहाँ पे, people जो थे वो men and women थे ना, they were available there. These are very odd people, said the stranger. What the stranger said, that they are very odd. Odd means strange. They are the strange people. It means because ना, why did he say that? उसने ऐसा क्यों कहा कि they are very strange? Why did he say that? Because they were very much different from the trees and the cows. That's why he said this this word that they are very strange people. उसने stranger ने इसलिए ये word use किया क्योंकि ये जो person थे, men and women थे, वो different थे trees and plants से and then cows से. That's why he said they are very strange people. All right. They are the people of the greatest nation in the world, said the philosopher. Are they indeed? Said the stranger. They scarcely look so. And then philosopher explained that these are the people, not they were the people जो आपने देखा plants and trees and then cows, they were not the people, these are the people, and they are the people of the greatest nation in the world. All right. Then stranger said that are they indeed, is it real, क्या अच्छा रियल में ऐसा है, वास्तव में ये लोग अच्छा ये लोग हैं people, they are the people of the greatest nation. Oh, it was like that, okay. Okay. Then this was the story, and I think it must be a different and the interesting story. ये बाकी story से different था ना, and that was interesting also. All right, okay. So children, this was the story. Hope you would understood this chapter very well. So we will meet in the next part, that is part 2, where I will discuss the exercises, that is read and understand, questions, or fill in the blanks and all. All right. So have a good day. Bye bye.